प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे BSKC संस्कृत ऑनर्स के पाठ्यक्रम पर, जिसका विषय है कर्म की अवधारणा और प्रकार। प्रिय शिक्षार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं, BA ऑनर्स का यह पाठ्यक्रम धर्म और संस्कृति पर बात करता है। आज हमने जो आपके लिए इकाई का चुनाव किया है वह है कर्म कितने प्रकार के होते हैं और उसकी अवधारणा क्या है। प्रिय शिक्षार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण कारक है। मनुष्य के लिए 4 कर्म बताए गए हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय जो भारतीय संस्कृति का, भारतीय ज्ञान परंपरा का पूरे संस्कृत साहित्य में एक महत्वपूर्ण बोध कराता है, महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करता है। पुरुषार्थ चतुष्टय पूरे संस्कृत साहित्य को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। आप सब जानते हैं कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम लेते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। उसके बाद का जो साहित्य आता है उसे हम एक तरह से लौकिक साहित्य के अंतर्गत लेते हैं। लेकिन पूरे संस्कृत साहित्य को हम देखें तो जो पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा है, पुरुषार्थ चतुष्टय जिसको कहा जाता है, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 कंपोनेंट आते हैं, 4 इकाइयाँ आती हैं। उसमें जो आपका ये पाठ्यक्रम है BSKC 143 जो धर्म और संस्कृति पर बात करता है, इसमें जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है कर्म, उस पर आज हम बात करेंगे। मैं आपको कर्म के प्रकार और उसकी अवधारणा से पहले चाहूँगी कि आप इसको अच्छे से समझें कि पुरुषार्थ चतुष्टय, जहाँ से मैंने अपनी बात की शुरुआत की है, वह पुरुषार्थ चतुष्टय और कर्म की अवधारणा दोनों आपस में कैसे संबंधित हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, एक बार की बात है, एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ यमुना नदी के किनारे पर टहल रहा था। उसके शिष्य उसके साथ थे। जैसे वह टहलते टहलते किनारे पर खड़ा हुआ तो उसने पानी से बाहर निकलते हुए एक बिच्छू को देखा। जैसे ही बिच्छू बाहर आया, ऋषि ने सोचा कि अगर ये बिच्छू बाहर आ जाता है तो ये मर जाएगा। तो वह पानी के तालाब की तरफ जाता है और तालाब के पास जाकर उस बिच्छू को पकड़ता है। जैसे ही बिच्छू को पकड़ने की कोशिश करता है तो बिच्छू उसको डंक मार देता है। जहर उसके शरीर में चढ़ना शुरू हो जाता है। प्रिय शिक्षार्थियों, यह प्रक्रिया 2-3 बार ऐसे ही चलती है। बार बार जो ऋषि है वह उसको बचाने की कोशिश करता है, बार बार बिच्छू उसको डंक मारता है और वो जहर धीरे धीरे उसके शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। ये सारी की सारी प्रक्रिया उसके जो शिष्य थे वह भी देख रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उस अपने ऋषि को, अपने गुरु को वो कैसे बचाएं और कैसे समझाएं कि बार बार ये प्रक्रिया करने से जहर उनके शरीर में फैलता जा रहा है। एक शिष्य ने बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन किया, गुरुजी, आप ये जो बार बार बिच्छू को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यह बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है और जहर आपके शरीर में फैलता जा रहा है। अगर ऐसे ही आपके शरीर में फैलता गया तो आपकी इसमें मृत्यु स्वाभाविक है। तो आप क्यों इसको बार बार बाहर से अंदर पानी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऋषि था, जो गुरु था, उन्होंने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना। धैर्यपूर्वक उनकी बात को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि यह जो बिच्छू है, इसका जो कर्म है वह कर्म है डंक मारना। इसकी प्रवृत्ति है, जो प्रकृति ने इसको दिया है वह ये कर रहा है। बार बार ये कोशिश करता है कि जैसे इसको पकड़ा जाए यह अपने कर्म का निर्वाह करे, डंक मारने का निर्वाह करे। जब यह जानवर होकर डंक मारने की बार बार प्रक्रिया को नहीं छोड़ रहा है तो मैं कैसे अपने इस धर्म को, इस कर्म को छोड़ दूं जो मेरा कर्म है, मानवता की रक्षा करना, मानवता की देखरेख करना और मानवता के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना। इसलिए यह जो अपने कर्म का निर्वाह कर रहा है, वही मैं भी अपने कर्म का निर्वाह कर रहा हूँ। हम दोनों ही अपने अपने धर्म, अपने अपने कर्म में जुड़े हुए हैं।
इसलिए जब इसने बार बार मुझे मारने की कोशिश की, मेरे शरीर में जहर फैलाने की कोशिश की, ठीक उसी तरह मैंने भी अपने कर्म का निर्वाह करते हुए, अपने धर्म का निर्वाह करते हुए इसको बचाने की भरपूर कोशिश की। मैं इसको बचाने की प्रक्रिया में हूँ और यह मुझे मारने की प्रक्रिया में है। प्रिय शिक्षार्थियों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, ये सीख मिलती है कि धर्म और कर्म दोनों ही इकाइयाँ, दोनों ही कंपोनेंट, दोनों ही अपने आप में जुड़े हुए हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं, आप धर्म शब्द के अर्थ को भी समझिए। धर्म शब्द संस्कृत भाषा के ध्री धातु से बनता है, जो धारणा करने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। हमारा आचरण, जिसको हम धारण करते हैं, जो जीने की पद्धति को सिखाता है, जो अपने साथ जैसा व्यवहार करता है, जैसा आचरण अपना करता है, वही उसका धर्म बनता है। जैसे एक शिक्षार्थी का धर्म है कि वह शिक्षा ग्रहण करे, अपने एग्जाम की तैयारी करे, अपनी परीक्षा की तैयारी करते हुए तमाम दूसरी चीज़ों से ध्यान हटाकर अपने ध्यान को एकाग्र करे, अपनी एकाग्रता अपनी परीक्षा पर केंद्रित करे, और जब एकाग्रता अपनी परीक्षा पर केंद्रित करेगा तो वह विद्यार्थी जरूर ही, अवश्य ही पास होगा। इसलिए उसका यह कर्म है, यह ही उसका धर्म है। प्रिय शिक्षार्थियों, ठीक उसी तरह एक शिक्षक का धर्म क्या है? शिक्षक का धर्म है, शिक्षक का कर्म है कि वह अपने विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए जो सामग्री है, उनके ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा को जो एक पूरी की पूरी एक परंपरा, ज्ञान की जो परंपरा है, उस ज्ञान की परंपरा को अपने छात्रों तक पहुंचाए, अपने सामग्री को इकट्ठा करें, नए नए विचार प्रस्तुत करते हुए जो हमारे जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनकी व्याख्या करें, उन व्याख्या ग्रंथों को अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को समझाए। उन पाठ्य सामग्री में जो भी विषय वस्तु प्रस्तुत की गई है, जैसे अभी मैंने उदाहरण के रूप में मैंने बताया पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यह जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, वे जो शास्त्रों के अनुसार जो व्याख्या है और जो आज के संदर्भ में व्याख्या है, वह शिक्षार्थी से जो शिक्षक है वो अच्छे से उसको समझा पाए, यह उसका धर्म है और यही उसका कर्म है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि धर्म और कर्म दोनों ही अपने आप में जुड़े हुए हैं, आप दोनों को अलग तरह से कर नहीं देख सकते। इसलिए जब पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया तो धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष के साथ साथ धर्म जो कहा गया, जो आचरण के रूप में कहा गया, जो शिष्टाचार के रूप में कहा गया, जो एक तरह से अपने कार्य करने की जीवन पद्धति को जो कहा गया, जो धारण किया गया, वह उसका धर्म होगा। और उस धर्म को करते हुए जिन जिन कार्यों को निश्चित किया गया है उसके लिए, तो वह उसका कर्म होगा। प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कर्म की जो अवधारणा है हमारे यहाँ, हम सब जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में अगर हम ईशावास्य उपनिषद का वर्णन करें कि कहा हुआ कि कार्य करते हुए मैं 100 वर्ष की जीने की इच्छा रखता हूँ, यानी कि एक तरह से कुर्वेण ही कर्मणि जिज विषयत शतम समः, मैं कार्य को करते हुए अपना जो जीवन है उस जीवन को जीने की जो संख्या हो वह 100 वर्ष हो, लेकिन किसको करते हुए? कर्म को करते हुए, कार्य को करते हुए, काम को करते हुए। यह किसके अनुसार है? ईशावास्य उपनिषद के अनुसार। यहाँ ऋषि अपने मंत्र के माध्यम से ये कहता है कि जो 100 वर्ष की वायु आपको चाहिए, जो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में एक तरह से जो जीवन को जीने की आयु कही गई है, वह जीवन को जीने की आयु 100 वर्ष की तरह कही गई है कि 100 वर्ष एक समझी गई है कि 25 वर्ष आप ब्रह्मचर्य आश्रम को देंगे, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम को देंगे, 25 वर्ष आप वानप्रस्थ आश्रम को देंगे और 25 वर्ष आप संन्यास आश्रम को देंगे। हमारे यहाँ जो आश्रम व्यवस्था है, जो 25-25 भागों में बांटकर एक तरह से 100 वर्ष के रूप में एक कल्पना की गई है। लेकिन इन 100 वर्षों में भी जो ब्रह्मचर्य व्रत का जब पालन कर रहा होगा कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र, तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए वह अपनी शिक्षा को ग्रहण करेगा और शिक्षा को ग्रहण करते हुए वह अपनी आयु को बिताएगा। ठीक उसी तरह इन्हीं को 25-25 करके 100 वर्ष की जो आयु होगी, उस 100 वर्ष की उम्र के लिए उसको कार्य करते रहते हुए बितानी है।
यानी कि अपने जो उसका जो भी जीवन की पद्धति रहेगी, उस जीवन पद्धति में जो भी कर्म उसके लिए निर्धारित किए गए हैं, जो भी कार्य उसके लिए निर्धारित किए गए हैं, जो भी निश्चित किया गया है, इसलिए तो कहा गया, भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा कि तस्मै नमः कर्मणे। क्यों कहा गया? क्योंकि उस कार्य को करते हुए ही नमन है, जिस कार्य को मैं अपने हाथ में लेता हूँ। वो जो 100 वर्ष के जो जीने की इच्छा है, जो अपने कार्यों को करते हुए, अपने कार्यों को ही पूजा एक तरह से समझा जाए, जो एक तरह से कहा जाता है कि काम ही पूजा है, कार्य ही पूजा है। वो जो कार्य करने की, कार्य को पूज कर करने की जो अवधारणा है, वह इसलिए ही कही गई है, वह इसलिए ही कहा गया। भर्तृहरि ने नीति शतक में इसलिए ही कहा कि तस्मै नमः कर्मणे। आगे अगर हम भगवत गीता को लें तो भगवत गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहता है? श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर यही तो कहते हैं कि योग क्रमसु कौशलम, अपने कार्यों को करते हुए ही जो अपने काम को करते हैं, वह ही सबसे बड़ा आपके लिए कर्म है। इसलिए कहा कि संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण, ये 3 प्रकार के जो आपके कर्म हैं। कौन कौन से? संचित रूप से, प्रारब्ध रूप से और क्रियामाण। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता का उपदेश दिया तो वहाँ पर यही तो कहा। श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण युद्ध के क्षेत्र में जब दोनों ही सेनाएं, कौरवों और पांडवों की सेनाएं बीच में खड़ी होती हैं, जब अर्जुन और कृष्ण उनका सारथी होता है, अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार होता है और अर्जुन को मोह पैदा होता है। किसको देखकर? अपने जो आसपास जो उनके जो एक तरह से भाई बंधु थे, रिश्तेदार थे, उनको देखकर अर्जुन को जिस तरीके से मोह पैदा हो जाता है कि अगर मैंने अपने भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को मार कर राज्य व्यवस्था, राज्य का शासक हासिल भी कर लिया तो मैं राज किसके ऊपर करूँगा? यानी कि ये अपनेपन की मोह माया एक तरह से जो मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति भी है, उस मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति की ओर जाते हुए भी जब मोह भंग होता है, कृष्ण मोह भंग करते हैं अर्जुन का, तो अर्जुन को कृष्ण जी क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं कि तुम्हारा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो तुम्हारा कर्म है, क्या कर्म? क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करते हुए जो युद्ध करने का जो तुम्हारा धर्म है, जो युद्ध करने का तुम्हारा कर्म है, उसको तुम पूरा करो। यानी कि श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्म करने का याद दिलवाते हुए, कर्म करने की और अग्रसर करते हुए उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, आप सब जानते हैं महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होता है और कुरुक्षेत्र समवेते समवाया युधिष्ठ जो हमारा श्लोक आता है, उसमें भी भगवत गीता में यही कहा गया है कि कुरुक्षेत्र में, कुरु के मैदान में, जहाँ समवेत मेरी जो कौरवों और पांडवों की सेनाएं हैं, वो दोनों मिलकर जो आमने सामने खड़ी हैं, वहाँ पर क्या कर रही हैं? कौरवों और पांडवों की सेनाएं आसपास जब युद्ध के मैदान में आमने और सामने जब खड़ी होती हैं, तो वहाँ जब अर्जुन को अपने सामने अपने भाई बंधुओं को देखकर मोह पैदा होता है, उस मोह को भंग करने के लिए, उस मोह को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र के आज भी जो एक तरह से गीता स्थल के नाम से जाना जाता है, कुरुक्षेत्र के पास में ही है, ज्योति स्थल के नाम से, ज्योतिषर के नाम से वह जाना जाता है, वह जगह जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग किया था। यानी ये कहिए कि जहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो आप ये देखिए प्रिय शिक्षार्थियों कि वहाँ पर जो कर्मण्यवाधिकारस्ते हैं, जो सीधा ये कहा गया कि ये आप इनको अगर अपने धनुष से युद्ध नहीं भी करेंगे तो क्या यह जरूरी है कि ये जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, ये जीवित रहेंगे? यानी कि जीने और मरने का तुम्हारे हाथ में नहीं है।
तुम्हें केवल अपना कर्म करना है। और वो कर्म क्या है? ब्राह्मण का कर्म ब्राह्मण को बताया गया, क्षत्रिय को क्षत्रिय के, वैश्य को वैश्य को, शूद्र को शूद्र का। ये जो कर्म की अवधारणा है ये वहीं से एक तरह से इसकी व्युत्पत्ति और उत्पत्ति को अगर आप देखेंगे तो वहाँ से शुरू होती है। जब वेद में पुरुष सूक्त जब का वर्णन किया जाता है, उसका मंत्र है 90, 10वें सूक्त का 90वां मंत्र, ब्राह्मणस्य मुखमासीत् भावराजन्यकृत्य उरुत दश्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। यानी कि जो ब्राह्मण का जो कर्म है, ब्राह्मण का जो धर्म है, ब्राह्मण जो मुख से एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से जो व्यवस्था एक तरह से की गई, जिसको हमें प्रतीक रूप से व्यवस्था को समझना चाहिए, उस प्रतीक की व्यवस्था में ये कहा गया कि ब्राह्मण का कर्म है विद्या का अध्ययन अध्यापन करना, दान लेना, दान अपना जो शिक्षा रूपी दान है वह अपने छात्रों को समर्पित करना, छात्रों को देना, और अध्ययन अध्यापन में अपने समय को लगाना, यज्ञ करना, हवन करना, और उस हवन और यज्ञ के माध्यम से पूरी सृष्टि को स्वच्छ करना, साफ सुथरा रखना, और अध्ययन अध्यापन में अपने आप को लीन रखना। ठीक उसी तरह जो क्षत्रिय का कर्म था वह क्षत्रिय का कर्म है युद्ध लड़ना, अपने राज्य का विस्तार करना, अपने राज्य के प्रजा का एक तरह से रक्षा करना, और उस प्रजा के हित में अगर युद्ध भी करना पड़े, दूसरी सेनाओं से युद्ध भी करना पड़े तो उससे युद्ध करना। ठीक उसी तरह वैश्य का कर्म रहा कि जो व्यापार है, व्यापार में अपने धन को लगाना, दान देना, ब्राह्मणों को दान देना, राज्य की अगर ज़रूरत है टैक्स के रूप में जब दिया जाता है वह भी देना, और एक तरह से फल फूलों से अपने राज्य की उस भूमि को स्वच्छ रखना, साफ सुथरा रखना, और धन धान्य से परिपूर्ण अपने राज्य की रक्षा करना, रक्षा करते हुए धन धान्य से परिपूर्ण अपने बाहर की सेनाओं के साथ युद्ध लड़ते हुए अगर राज्य के रूप में उसकी ज़रूरत पड़े उसकी धन की, उस धन को भी दान कर देना। यह एक तरह से वैश्य का कर्म रहा। ठीक उसी तरह शूद्रों का कर्म रहा। जो तीनों वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन तीनों वर्ण का एक तरह से ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, और जो जब भी ज़रूरत पड़े राजा के कार्यों में हाथ बंटवाना, अगर नियुक्त किया जाए तो उस नियुक्ति की जो आपके जो एक तरह से जो ड्यूटी दी गई है, जो कर्तव्य दिया गया है, जो धर्म दिया गया है, जो कर्म में नियुक्ति की गई है, उसको एक तरह से पूरा करना, तीनों वर्ण की एक तरह से सेवा करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की। लेकिन आपातकालीन स्थिति में अगर आपके पास धन है तो वह धन जब आप धन बीच में आता है तो एक तरह से वैश्य का काम होगा, यानी कि जो शूद्र वर्ण होगा उसको वैश्य का भी दायित्व का निर्वाह कर सकता है, वैश्य का भी जो कार्य है जो एक तरह से उसको आपद धर्म के तहत करना पड़ सकता है, उसे भी वह करे। यानी कि जो तीनों वर्ण हैं उन तीनों वर्ण की आपात स्थिति में शूद्र जो वर्ण होगा वह तीनों के जो नियुक्त कार्य हैं, तीनों वर्णों के जो धर्म हैं, तीनों वर्णों के जो एक अवधारणा जो प्रतीकात्मक रूप से समाज के बीच में जो पुरुष विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों की चतुर्थ वर्ण की तीनों उपयुक्त वर्ण की सेवा करने के साथ साथ अगर ज़रूरत पड़े तो वह ब्राह्मण का जो धर्म है उसका भी निर्वाह कर सकता है। अगर ज़रूरत पड़ती है चतुर्थ वर्ण को तब वह राज्य का भी सीमा में लड़ाई के मैदान में जा सकता है, हथियार उठा सकता है और क्षत्रिय वर्ण के साथ मिलकर अपने योगदान को अपनी ड्यूटी को पूरा कर सकता है। ठीक उसी तरह अगर शूद्र के पास धन है और आपात स्थिति में अगर कोई अकाल पड़ा है या राज्य के अंदर प्रजा को भी ज़रूरत है और राज्य का राजकोष अगर कम पड़ता जा रहा है या किसी तरह की ऐसी कोई विपत्ति आन पड़ती है तो शूद्र जो क्या है उसको अपने
अपने द्वारा संचित किया हुआ धन, अपने द्वारा संग्रहित किया हुआ धन, वह उस वैश्य धर्म का निर्वाह करते हुए, वैश्य कर्म का निर्वाह करते हुए शूद्र अपने संचित किए हुए धन को, एकाग्र किए हुए धन, इकट्ठित किए गए धन को अपने राज्य की सेवा करने में, राज्य की रक्षा करने में, प्रजा की भलाई करने में उस धन को लगा सकता है। प्रिय शिक्षार्थियों, आपने यहाँ ध्यान देने की कोशिश अवश्य की होगी कि जो कर्म की अवधारणा है हमारे यहाँ वेदों से लेकर, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, वेदों से लेकर फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, वेदांग, वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कल्प की जब हम बात करते हैं तो उस कल्प के अंतर्गत ही हमारे सूत्र साहित्य आता है। सूत्र साहित्य के अंतर्गत ही गृह सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र, ये सूत्र आते हैं। और सूत्रों में धर्म सूत्र जो है, धर्म सूत्रों के अंतर्गत आपके धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र, धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति, धर्मशास्त्र सूत्र और स्मृतियाँ, जितनी भी स्मृतियाँ वो आती हैं, उन सब स्मृतियों में कर्म की अवधारणा और कर्म के प्रकारों का वर्णन जो दिया गया है वह बहुत ही पठनीय है। अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपको धर्मशास्त्रों में निहित इन तमाम विषयों को और ज़्यादा गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर हम बाद के साहित्य को देखें, जो रामायण महाभारत, और फिर उसके बाद रामायण महाभारत के बाद आपके तमाम नाटक, गद्य काव्य, चंपू काव्य, आपके पुराण, इतिहास कालीन पुराण, इतिहास जो ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ रामायण और महाभारत, उन सब में कर्म पर बल दिया गया है। क्योंकि जितना धर्म का महत्व है, जितना धर्म के बारे में आप भारतीय संस्कृति, भारत बौद्ध सिखाता है, ठीक उसी तरह आपको कर्म के महत्व का भी उतना ही महत्वपूर्ण कारक, उतना ही महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। प्रिय शिक्षार्थियों, अब हम बात करेंगे प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। निष्काम कर्म भी होता है, यानी कि जो हमारी इंद्रियों के, जो एक तरह से हमारी इंद्रियों द्वारा जो इंद्रिय जनित जो काम है, एक हम अपने मस्तिष्क के द्वारा करते हैं, यानी कि आप अपने सोचने में, चिंतन मनन में अपने कर्म को करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप अपने जो हाथ पैरों के माध्यम से जो काम किए जाते हैं, यानी कि जो संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है और क्रियामान है, ये कर्म तो हैं ही। मोटे तौर पर मैं आपको समझाने के लिए दृष्टिकोण से ये कहूँगी कि हमारे मनसा, वचना और कर्मणा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और कर्म के द्वारा, हमारी मनसा, वाचा, कर्मणा, ये जो अवधारणा है, ये हमारे लिए इसलिए ही अवधारणा दी गई है कि हम न केवल कर्म अपने हाथ पैरों से, शारीरिक इंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ हमारी हैं, उनके माध्यम से करते हैं, बल्कि चिंतन और मनन के माध्यम से भी हम कर्म करते रहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे तमाम जो ऋषि मुनि थे, वो जो ऋषि मुनि थे हमारे, उन ऋषि मुनियों ने बहुत ही ध्यान से, मनन से, चिंतन से, गहन आंतरिक क्रियाओं को, इंद्रिय क्रियाओं को वश में करते हुए, आसपास के वातावरण से मुक्त होकर, ध्यान लगाकर जिस तरह से मंत्रों का निर्माण किया, उन मंत्रों के निर्माण में पूरी सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन हमें दिखाई देता है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, हमारे जो 5 जो तत्व हैं, उन 5 तत्वों की अवधारणा, उन 5 तत्वों को जिस तरीके से ऋषि अपने चिंतन मनन के माध्यम से, ऋषियों को इसलिए भी ऋषियों को कहा जाता है मंत्र दृष्टा ऋषि, जिन मंत्रों को देखा है, जिन मंत्रों को देखा का क्या अभिप्राय हुआ, यहाँ मंत्रों को देखने का अभिप्राय ये हुआ कि जितने भी हमारी जो ज्ञान की जो प्रक्रिया है, उस ज्ञान की प्रक्रिया में धर्म, अपने ज्ञान की प्रक्रिया में उन सारी अवधारणाओं को लेते हुए, जिस तरीके से ऋषियों ने अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, अपने ज्ञान
चक्षुओं के माध्यम से उस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में निहित ज्ञान को जब देखा, मनन किया, चिंतन किया, उन मंत्रों में निहित ज्ञान को आकर कहाँ समेटा गया? वेदों में, वैदिक संहिताओं में। इसलिए प्रिय शिक्षार्थियों, जब मैंने बात की थी पूरे संस्कृत साहित्य को, न केवल संस्कृत साहित्य को बल्कि पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा को जब आप समझना चाहते हैं, जब इसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं, तो आप ये पाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो पूरी ज्ञान परंपरा समाहित है वह संस्कृत के इन्हीं ग्रंथों में समाहित है। और इन ग्रंथों में क्यों समाहित है? क्योंकि ये जो मंत्र जो देखे गए ऋषियों के द्वारा, ऋषिकाओं के द्वारा, जो मंत्रों को देखने के बाद जिन मंत्रों में जो ज्ञान जो समाहित ज्ञान था, उन समाहित ज्ञान को ऋग्वैदिक संहिता के माध्यम से, यजुर्वैदिक संहिता के माध्यम से, सामवेद संहिता के माध्यम से, अथर्ववेदीय संहिता के माध्यम से, इन संहिताओं के माध्यम से जिस तरीके से ज्ञान को समाहित किया गया, जिस तरीके से उस पूरे ज्ञान की परंपरा को शास्त्रों में निहित किया गया, वह शास्त्रों में निहित जो हमारा ज्ञान है वह क्यों हमारे सामने है, कैसे हमारे सामने आया, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है, कर्म की अवधारणा, कर्म के प्रकार। यही तीनों प्रकार जो संचित ज्ञान था, जो प्रारब्ध किया गया और फिर क्रियामान किया गया, ये जो तीन ज्ञान की कर्म की जो प्रक्रिया है, इस कर्म की प्रक्रिया को, कर्म की अवधारणा को, ये जो हमारा संचित ज्ञान है, इस संचित ज्ञान को जो समेटा गया उस पूरी भारतीय ज्ञान की परंपरा में निहित इसलिए ही हो पाया क्योंकि हमारे ऋषियों ने जिस जिस मंत्र को जिस ऋषि ने देखा, उन ऋषियों ने अपने अपने उस ज्ञान को, किसी ने ऋग्वेद का देखा, किसी ने यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, इन चारों संहिताओं को बद्ध करके ऋषियों ने, जो मंत्र दृष्टा ऋषि थे, उन्होंने अपने ज्ञान को कर्म के द्वारा ही इस संचित ज्ञान को वेदों में समाहित किया। प्रिय शिक्षार्थियों, आज आपने पढ़ा धर्म और संस्कृति पर आधारित यह हमारा पाठ्यक्रम BSKC 143, जिसमें कर्म की अवधारणा और प्रकार। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको यह अवधारणा कैसे धर्म से भी जुड़ी हुई है वह, और ये तीन प्रकार जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हमने आपके सामने स्पष्ट किए हैं, इसको आपने बहुत ध्यान से देखा और सुना होगा। और मैंने बीच में ही आपको बताया था, परीक्षा के दृष्टिकोण से इस ज्ञान का, इस पाठ्यक्रम ज्ञान के साथ साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम को समझने के लिए आपको महाभारत, वेद, रामायण और भगवत गीता, सबसे महत्वपूर्ण भगवत गीता, उपनिषद, ईशावास्योपनिषद का मैंने आपके सामने संदर्भ दिया। इन तीनों को आप, भर्तृहरि का नीति शतक मैंने आपके सामने कोट करते हुए कहा, इन तीनों ग्रंथों का आप बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे, जिससे आपका यह प्रश्न पत्र धर्म और संस्कृति का और ज़्यादा स्पष्ट होगा। मुझे आशा है कि आपको किसी भी तरह की कोई आवश्यकता शायद इस लेक्चर सुनने के बाद नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रश्न, कोई भी जिज्ञासा, कोई भी समाधान ना निकले और निकालना चाहें तो आप स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, मानविकी विद्यापीठ की ईमेल से आप हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे हम पाठ्यक्रम की अगली कड़ी में। नमस्कार। Do you wish to be part of a television studio like this, or any other media system, or already part of any media system, want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism and New Media Studies. Here in the School of Journalism and New Media Studies, we are offering program for all set of people
to learn and enhance the media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets a benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOGNMS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have masters in journalism and mass communication. The eligibility is bachelor's degree, and we are अज़ीज़ तलबा व तलबात आदाब। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है उर्दू में ड्रामा, फ़न और रवायत। ड्रामा दरअसल एक यूनानी लफ्ज़ है जिसके माने होता है करके दिखाना, यानी किसी चीज़ को करके दिखाना। और करके भी कैसे, अमलन करके दिखाना स्टेज वगैरह पर। अगर ड्रामे की तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो ड्रामे का आगाज़ हिंदुस्तान ही से होता है, यानी कि संस्कृत में इब्तदाई ड्रामे लिखे गए। कालिदास के ड्रामे जो आज भी बहुत मकबूल हैं और संस्कृत ज़बान से वो हिंदुस्तान के बाहर, यानी कि तराजीम होकर, उनके तर्जमा होकर वो बाहर गए और उनको हम उर्दू के बुनियाद गुज़ार, यानी कि इब्तदाई मतलब ड्रामों में उनको शुमार किया जा सकता है संस्कृत ज़बान के। जब ड्रामा यूरोप में फ़रोग पा रहा था, यानी कि शेक्सपियर वगैरह के ड्रामे बहुत परवान चढ़ रहे थे, बहुत फ़रोग पा रहे थे, बहुत मकबूलियत हासिल कर रहे थे, और उसके बाद ये दुनिया के दीगर ज़बानों में, दीगर तरक्की याफ्ता ज़बानों में ड्रामा लिखने का या ड्रामा लिखकर उसको स्टेज पर अमलन करके दिखाने का, प्ले करने का एक रवायत, एक रिवाज शुरू हो गया। वैसे तो ड्रामे को या ड्रामे की तारीफ़ को अगर देखा जाए तो ड्रामा इंसानी ज़िंदगी के आगाज़ से ही शुरू होता है। जैसे इब्तदाई दौर में, यानी कि जब इंसान के पास में तहरीरी ज़बान नहीं थी, यानी कि कोई उसकी भाषा, उसकी ज़बान, लैंग्वेज नहीं थी, उस दौर में भी अपनी मर्ज़ी के, यानी कि अपने काम की बातों को वो इशारे कनायों में ही बात करता था। और जैसे जब इंसान बिल्कुल बाशऊर नहीं था,
जंगल में शिकार करना और सिर्फ खाने की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरना, शिकार करना। कभी कभी ऐसा भी होता रहा होगा कि शिकार करते वक्त या तो खुद ज़ख्मी हो गया होगा या फिर अपने शिकार को मारकर उसको उसके तजुर्बात अपने गिरोह में, अपने दूसरे साथियों में शाम के वक्त या रात में उसने बयान किए होंगे कैसे कि मैं शिकार के पीछे कैसे भागा, शिकार ने मुझ पर ऐसे हमला किया, मैं इतना बच गया, ये मुझे ज़ख्म आया है, मुझे चोटें आई है। तो वो एक हम ड्रामे का उसको इब्तदाई दौर कह सकते हैं, यानी कि वो इशारे में बात कर रहे हैं, इशारे में करके दिखा रहे हैं। लेकिन ड्रामे की तारीफ़ के मद्देनज़र अगर इसको देखा जाए तो ये जैसे ड्रामे में मैंने अभी ज़िक्र किया कि अमलन करके दिखाना, ये शुरुआती दौर है। यूरोप के साथ साथ दुनिया के दीगर ममालिक में भी ड्रामे का आगाज़ हो रहा था, ड्रामा आवाम में मकबूल हो रहा था। अब चूँकि हिंदी, उर्दू और संस्कृत में तो कदीम ज़माने में ही ड्रामे लिखे गए, हमारे यहाँ यानी कि उर्दू ज़बान में ड्रामे का आगाज़ लखनऊ से होता है। और चूँकि लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, वहाँ बहुत सारे नवाबिन की रिहाइश थी, तो उन्हीं में से एक वहाँ के नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह। उनको इस बात का शौक़ हो गया कि दरबार के अंदर, अपने दरबार के अंदर सिर्फ दरबार तक ही महदूद रहे। उन्होंने स्टेज पर ड्रामा खेला। कई नाक़दीन ये कहते हैं कि ड्रामा नहीं, ये रहस्य है, यानी ख़वास के लिए। नवाब वाजिद अली शाह एक आशिक मिजाज आदमी थे और अपनी मुलाजमा, जो उनकी मुलाजमा थी, उनको वो इस तरह श्रृंगार यानी कि मेकअप वगैरह करा करके, जैसे राधा और कन्हैया की मोहब्बत की बातें, प्रेम कथाएं, इन सब को वो दरबार में अपने इसको खेला करते थे। यानी कि खुद कृष्ण का रोल अदा करते थे और मुलाजमा को, उनको गोपिया या दूसरी यानी कि राधा वगैरह के रोल में उनको निभाना पड़ता था। लेकिन उर्दू में आगाज़ हो चुका था स्टेज पर कुछ करके दिखाने का, यानी कि जैसे अब ड्रामे की बात चल रही है, तो ड्रामा यानी कि स्टेज पर अमलन करके दिखाना। लेकिन अगर ड्रामे की मुकम्मल तौर पर अगर उसको देखा जाए, कि उसके अज़ाए तरकीबी के मुताबिक देखा जाए, तो वाजिद अली शाह का ये रहस्य है, जो मुकम्मल तौर पर ड्रामा उसको हम नहीं कह सकते, ये दरबार तक ही महदूद रहा। और जब दरबार से बाहर इस बात की भनक लगी, तो लखनऊ के एक ड्रामा निगार, जिनको हम उर्दू का पहला ड्रामा निगार कहते हैं, तालिब बनारसी, उन्होंने ही इसको, और अमानत लखनवी ने सबसे पहले ये ड्रामा लिखा, जिसका नाम उन्होंने वही हिंदी देवमालाई से लिया है, यानी उसका नाम रखा है इंद्र सभा। जैसे इसके नाम से ही ज़ाहिर होता है कि हिंदुस्तानी देवमालाई ये नाम है। तो अमानत लखनवी ने ये पहला ड्रामा लिखा इंद्र सभा के नाम से। इसमें जैसे इंद्र को देवताओं का राजा कहते हैं, और उसके दरबार में रक्कासाई होती है, रंभा, उर्वशी वगैरह वगैरह। तो उन्होंने भी अपने इस ड्रामे यानी कि इंद्र सभा को लिखने में वही वाजिद अली शाह के दरबार से ही उसकी कुछ मदद ली, और ये ड्रामा उन्होंने
लिख दिया। ये बात है 1852 में। 1852 में अमानत लखनवी ने ये ड्रामा लिखा और 1854 1854 में इसको स्टेज पर अमलन यानी कि इसको प्ले किया गया, इसको खेला गया। लखनऊ और उसके आसपास के अवाम ने इसको इतना पसंद किया, यानी कि ये बहुत मकबूल हो गया और उसकी देखा दाखी यानी कि उसी को देखकर लखनऊ और बनारस में दूसरे अदीबों ने भी ड्रामे लिखने शुरू किए, जिसमें अभी मैंने जिक्र किया कि तालिब बनारसी ने भी ड्रामा लिखे और ये रवायत उर्दू में मुकम्मल तौर पर एक शुरू हो गई, यानी कि उर्दू में ड्रामा निगारी का आगाज़ हो गया, ड्रामे लिखे जाने लगे। कुछ नाक़दीन हमारे ये कहते हैं कि ड्रामा लखनऊ से सीधा मुंबई का रुख करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया और उनको मटिया ब्रुज यानी कि मगरबी बंगाल में उनको भेज दिया, तो उनके साथ कुछ अदीब भी वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पर भी उनके ऐशो आराम के लिए यानी कि उनके वक्त गुजारी के लिए ड्रामे लिखे। और कुछ हमारे ड्रामा निगार यानी कि उर्दू के ड्रामा निगार ढाका तक पहुँच गए। ढाका जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, वो अलग मुल्क की हैसियत रखता है। उस वक्त यानी कि जब ये मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान था, तो ऐसे लखनऊ से ड्रामा निकलता है, ड्रामे के रवायत शुरू हो कर के बंगाल ढाका तक हुई और फिर चूँकि ये दौर वो दौर है 19वीं सदी के अवाइल में, जब ड्रामे को एक पेशेवराना शक्ल इख्तियार कर ली इसने। और ये बम्बई में उस वक्त पारसी थिएटर वजूद में आ चुका था। पारसी थिएटर यानी कि इस थिएटर ने ड्रामे प्ले यानी कि ड्रामा खेलना शुरू किया। उसमें आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक यानी कि आवाम की चाहत को, उसकी पसंद को देखते हुए उन्होंने ड्रामे में गज़ल, उर्दू गीत और उसमें मकालमे वगैरह को बहुत खूबसूरती से उन्होंने उसमें उसे पेश करना शुरू किया और वो ड्रामे बहुत पसंद किए गए। ये पारसी थिएटर चूँकि एक तिजारती गर्ज से कायम किया गया था, उनका काम था कि सिर्फ हमें कुछ यानी कि थोड़ा पैसा लगा करके ज़्यादा कमाई कर लेना, ज़्यादा आमदनी करना। ऐसे उर्दू में जब ड्रामा बम्बई पहुंचता है और वहाँ पारसी थिएटर में उसको आगाज़ हो जाता है, तो बहुत से कुछ ड्रामा निगार जो सिर्फ कंपनी के लिए, पारसी थिएटर के लिए ड्रामे लिख रहे थे, उन्होंने उससे रब्ता किया और एक ये आमदनी का ज़रिया बन गया। ऐसे में हमारे ड्रामा निगार, बहुत सारे ड्रामा निगार सामने आते हैं निकल करके। कुछ अदीब ऐसे थे जो उस वक्त नावल लिख रहे थे, अफसाने लिख रहे थे और ड्रामे की मकबूलियत को देखते हुए उन्होंने ड्रामे भी लिखे। ऐसे में डॉक्टर यानी कि राजेंद्र सिंह बेदी, किशचंदर, असमत चुगताई, सादत हसन मंटो और मोहम्मद हसन, हबीब तनवीर, बहुत सारे ऐसे ड्रामा निगार हैं जिन्होंने इस रवायत को बिल्कुल यानी कि इस काबिल बना दिया कि ये मगरिबी ड्रामों के आँख से आँख मिलाकर बात करने के काबिल बन गया। अब चूँकि जब ड्रामे में बहुत सारे ड्रामा निगार, इस फ़न में, इस सिन्फ में बहुत सारे ड्रामा निगार इसमें किस्मत आजमाई कर रहे थे, ऐसे में
कुछ सिर्फ पेशेवराना और कुछ अदबी ड्रामे लिख रहे थे। अदबी ड्रामा यानी कि वो जो सिर्फ उन्होंने अदबी शक्ल तो इख्तियार की, लेकिन वो कभी स्टेज पर खेले नहीं गए, स्टेज पर प्ले नहीं किए गए। इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा अनारकली, उसमें इन्होंने एक यानी कि अकबर बादशाह के बेटे यानी कि सलीम के मोहब्बत का उन्होंने उसमें ज़िक्र किया है और उसको इतनी खूबसूरती से उसमें के साथ में उसको लिखा है कि उसने एक अदबी शक्ल इख्तियार कर ली, यानी कि उर्दू ड्रामा निगारी की यानी कि जो सिनफ है इसमें एक अदबी शक्ल इख्तियार कर ली। हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाज़ार, ये इतना मकबूल हुआ कि इस ड्रामे की देखा देखी इनके हम असरों ने भी इस तरह के ड्रामे लिखने शुरू किए। अब चूँकि अब मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ इसी में, कि पीछे की तरफ जाता हूँ कि जैसे जो रवायत वहाँ से यानी कि वाजिद अली शाह जिसने जो रखी थी, यानी कि उन्होंने जो रहस्य खेला उसका नाम जैसे कि राधा कन्हैया के नाम से उसको कुछ लोग हमारे नाक़दीन ड्रामे में के ज़मरे में रखते हैं, लेकिन कुछ नाक़दीन उसको ड्रामे के ज़मरे से बाहर रखते हैं। उसमें नवाबों की यानी कि वो सिर्फ ख़वास तक ही रहा और आवाम में किसी भी सिनफ को आवाम में मकबूलियत जब मिलती है तब जब वो आवाम उसको पसंद करे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक उसकी रसाई हो। ऐसे ही हमारे ड्रामा निगारों में एक आगा हश्र काश्मीरी, जो जिनके बाबा व अजदाद कश्मीर के रहने वाले थे, लेकिन वो अपने तिजारती गर्ज से बनारस में आ गए और उन्होंने यानी कि आगा हश्र ने अपना तखल्लुस यानी कि अपना जो पेन नेम जिसे कहते हैं तखल्लुस, वो काश्मीरी ही रखा, यानी कि आगा हश्र काश्मीरी। ये इनको हम ड्रामा उर्दू ड्रामा का इनको बाबा मतलब बाबा आदम कह सकते हैं, या इनको ऐसे कि ये बाबा उर्दू ड्रामा कह सकते हैं। इन्होंने उर्दू ड्रामे को उन बुलंदियों तक पहुंचाया जहां तक उसको जाना चाहिए था। आगा हश्र काश्मीरी ऐसे उर्दू के पहले ड्रामा निगार है जिन्होंने मालिक गैर यानी कि विदेशी जो ज़बानें हैं, दूसरे मुल्क की ज़बानें हैं, उनमें लिखे गए ड्रामों का तर्जुमा किया और उनको उर्दू में तर्जुमा करने के बाद उनको इस खूबसूरती इस फ़नकारी के साथ में उसको लिखा कि वो जब उन आवाम में वो पढ़े गए, उनको प्ले किया गया, पेश किया गया, करके दिखाया गया, आवाम को ऐसा महसूस हुआ कि ये उर्दू ही के ड्रामे हैं। ऐसे ही इनका एक ड्रामा जो बहुत तकरीबन निसाब में शामिल किया जाता है, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जामियात में जिन जामियात में शोबा उर्दू है वहाँ पर सोहरा बिन रुस्तम, ये इतना मकबूल हुआ उनका ड्रामा कि इसको जब प्ले किया जाता है, इसको दिखाया जाता है, करके दिखाया जाता है इसको स्टेज पर, तो जो सामाईन होते हैं उनको मतलब एक तरीके से वो जज्बाती हो जाते हैं। और इस ड्रामे में का अगर इस पर थोड़ा सी रोशनी डाली जाए तो बाप और बेटा होते हैं। जब बाप अपने बेटे की वलादत से कब्ल ही किसी मुल्क की फ़ौज का सिपह सालार होता है और उसके अपनी शरीक हयात को ये कहकर चला जाता है कि अगर बेटा होगा तो उसको ये मोहर यानी कि मेरी ये निशानी ये उसकी बाजू पर बांध देना। और ऐसा ही होता है, बेटा होता है वो उसको उसकी वालदा उसके बाजू पर वो निशानी बांध देती है, और क्योंकि उसकी तरबियत उसकी तालीम एक अच्छे से होती है और वो जल्द ही एक नौजवान
यानी कि बिल्कुल ऐसा नौजवान हो जाता है, देखने में लगता है कि बहुत ही उसको बहादुर देखने में लगे, क्योंकि उनके वालिद का नाम रुस्तम था। रुस्तम एक बहुत बहादुर होता है और बेटे को भी उसकी यानी कि वालदा उसके वालिद के मुताबिक यानी कि उसी के बराबर का एक बहादुर बनाना चाहती है, और वो इसमें काफ़ी हद तक इसमें कामयाब रहती हैं। और उसका बेटा यानी कि सोहराब भी एक मुल्क की फ़ौज में एक सिपह सालार की नौकरी कर लेता है, यानी कि उस मुल्क की फ़ौज का सिपह सालार बन जाता है। अब इत्तेफाक की बात देखिए कि जिस मुल्क की फ़ौज का सिपह सालार वालिद है और उसकी दुश्मनी उस मुल्क की फ़ौज से होती है जिसका उसका बेटा उसका सिपह सालार होता है। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि एक दूसरे को पहचानते नहीं, जानते नहीं, और जब आमने सामने होते हैं दोनों तो उनको ये होता है कि वो अपनी जवानी के दिन याद करता है रुस्तम, और वो कहता है कि मेरे जैसा बहादुर दुनिया में नहीं है। जैसे कसीदे पढ़े जाते हैं किसी की बड़ाई में, ऐसे ही वो अपने कसीदे खुद पढ़ता है, अपनी तारीफ़ खुद करता है कि मैं एक बहुत बड़ा बहादुर हूँ और मेरे सामने दुनिया का कोई भी बहादुर टिक नहीं सकता, मैं इतना ताकतवर हूँ। अब चूँकि उसकी ढलती उम्र होती है और सोहराब जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, वो भी उससे नहीं डरता, और दोनों इस बात पे इत्तेफाक हो जाता है, दरिया के किनारे आमने सामने फ़ौज खड़ी है कि इन अफवाज को मरवाने से क्या फ़ायदा, अगर हम दोनों आपस में लड़ लेते हैं, हम दोनों जंग करते हैं, और अगर जो जीतेगा उस मुल्क की जीत होगी। तो इस पर उनमें एक सहमति, उनमें इत्तेफाक हो जाता है, और दोनों उसमें हो जाए ना मैदान जंग में दोनों बाप और बेटा उतर आते हैं। लेकिन चूँकि बेटा जवान होता है, बाप को कई बार पटकनी दे देता है, बेटे को ये नहीं पता होता कि मेरा बाप है, और बाप को ही नहीं पता होता कि मेरा बेटा है। और जब उसको गुस्सा आता है तो वो आखिर में बड़े जोश और जज्बे से कहता है कि खुद उसके मुंह से निकलता है कि रुस्तम तुझे क्या हो गया। जैसे ही सोहराब इसको सुनता है कि रुस्तम तो मेरे वालिद का नाम है, तो वो रुक जाता है, और इस बात का फ़ायदा उठा करके रुस्तम सोहराब के जो पेट में तलवार यानी कि खंजर घोंप देता है, वो ज़मीन पर गिर पड़ता है। और गिरने के बाद वो कहता है कि भाई देखिए मेरे वालिद साहब दुनिया के बहुत बड़े बहादुर आदमी हैं, उनको पता लगेगा तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको नाम और निशान मिटा देंगे। मेरे वालिद साहब का यानी कि मेरे बाप का नाम भी रुस्तम है, और ये उनकी निशानी अपनी बाजू पे बंधी निशानी दिखाता है, तो वो पहचान लेता है उस बाजू पे बंधी उसको मोहर को यानी कि निशानी को, और रोने लगता है। अकेला बेटा जिसका वो अपने हाथ से ही मैदान जंग में उसका कत्ल कर देता है, तो तब कहता है ये इतना जज्बाती यानी कि इतना गमगीन हो जाता है कि कहता है कि ए आसमान तुम फट क्यों नहीं गए, धरती से भी कहता है कि तू क्यों नहीं फट गई कि आज का दिन मुझे देखने को मिला है। यानी कि ये सीन इस ड्रामे का यानी कि सोहराब और रुस्तम के नाम से जो ड्रामा उर्दू में है, ये इतना गमगीन होता है कि जो सामाईन होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इस ड्रामे ने उर्दू ड्रामा निगारी में यानी कि ऐसी मकबूलियत हासिल की कि ये एक बहुत ही पसंद किया गया, और इसको अवाम ने पसंद किया। बाद में इसको रेडियो पर भी, रेडियो ड्रामों पर भी इसको दिखाया, मतलब पेश किया गया। ड्रामा पारसी थिएटर से बाहर कदम रखता है। बहुत सारे ड्रामा निगार हमारे यानी कि उर्दू अदब में सामने आ जाते हैं, बहुत से ड्रामे लिखे जाते हैं। ड्रामे इसके साथ साथ जब और तरक्की याफ्ता और बनता है तो ये थोड़ा रेडियाई ड्रामे बहुत पेश किए गए, यानी कि बहुत
इसने भी बहुत मकबूलियत हासिल की। और दौरे हाजिर में एक ड्रामा यानी कि जिसको नाम दिया गया नुक्कड़ नाटक, यानी कि गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे इसको अमलन करके दिखाते हैं, वो भी ड्रामे के ही ज़मरे में आता है। और इसमें दौरे हाजिर में यानी कि आज के दौर में इसको बहुत मकबूलियत हासिल हो रही है। ऐसे ड्रामे जो जिनकी बदौलत उर्दू अदब के इस सरमाए को जिन्होंने माला माल कर दिया, उनमें बहुत सारे हमारे ड्रामा निगार हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जो सिर्फ अदबी हैसियत हासिल करने के बाद सिर्फ किताबों तक ही महदूद रह गए। उनको अदबी हैसियत तो हासिल हो गई, लेकिन वो कभी स्टेज पर प्ले यानी कि खेले नहीं गए, प्ले करके उनको नहीं दिखाया गया। और लेकिन उनकी भी अपनी एक अदबी अहमियत है और वो अदब में शुमार किए जाते हैं। उनको मुख्तलिफ जामियात में उनको निसाब में रखा गया है। और कुछ हमारे उर्दू ड्रामों का तर्जुमा दीगर दुनिया की दूसरी ज़बानों में भी हो रहा है। तो इससे हमें ये इस पे फ़ख्र करना चाहिए कि हमारी ज़बान यानी कि उर्दू ज़बान में इतने बेहतरीन, इतने उम्दा ड्रामे लिखे गए जो हिंदुस्तानी अवाम ही नहीं बल्कि जब उनके तराजिम दुनिया की दीगर ज़बानों में हो तो वहाँ भी उनको बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। तो इससे आज हमने जिस पे बात की उर्दू ड्रामे का आगाज़ और यानी कि उसका फ़न और रवायत, फ़न क्या है, रवायत कैसे उसकी फ़रोग पाती है, तो इससे हमें उर्दू ड्रामे के मुतालिक बहुत कुछ मालूमात हासिल हुई। इसी के साथ मैं अपने इस स्पीच को अख्ताम तक पहुंचाता हूं। आदाब। Are you a fresh graduate? Do you want to fulfill your educational aspiration by pursuing higher education in various interdisciplinary and multidisciplinary areas like environmental science, environment and occupational health, philosophy, sustainability science, folklore and culture studies? If yes, the School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies offers various programs like Master's Program, Graduate Program, Postgraduate Diploma, Certificate and Appreciation Program. The school offers 5 Master's Program. Master of Science, Environmental Science. The eligibility criteria for MSc Environmental Science is Graduate in Science, BTech, BE, Agriculture Graduate, Forestry Graduate and Veterinary Graduate. School also offers Masters in Environment and Occupational Health, Masters in Sustainability Science, Masters in Philosophy and Masters in Folklore and Culture Studies. The eligibility criteria for these 4 Masters program is graduate in any discipline. School also offers various socially relevant and need-based PG Diploma program like PG Diploma in Sustainability Science, PG Diploma in Environment and Occupational Health, PG Diploma in Folklore and Culture Studies and PG Diploma in Migration and Diaspora Studies. The school also offers PG Certificate in Climate Change and Avshist Prabandhan mein Praman Patra. The school also offers 2 doctoral programs, PhD in Environmental Science and PhD in Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies. The school offers various innovative
technologies and multimedia for providing a very excellent student support system. The study material is of high quality. The learner support is provided through Gyan Darshan, Gyan Vani, IRC, Swayam Prabha and Swayam channel of IGNOU. For more detail, please log in to IGNOU website. For online admission in these programs, visit school site and also the Samarth online education portal of IGNOU. So please join these programs and fulfill your educational aspiration. We wear clothes on a daily basis. But have we ever wondered, where do our clothes come from? Who makes our clothing? And who are the people and the process responsible for the whole manufacturing of our clothing? If you want to know more about this, Indira Gandhi National Open University from the School of Continuing Education has launched a program which is Certificate in Apparel Merchandising. There are many benefits after doing this program. You can become a designer in various fields. It can be fashion designer, apparel designer, costume designer, or even a textile designer. One can also work as a fashion consultant. Research and development is another field which one can take up after doing this certificate course. Going into academics is another perk after doing this program. Getting into fashion houses or fashion studios as an intern is also a very good option post doing the certificate in apparel merchandising. The basic eligibility of the program is 10+2. The duration of the program is 6 months to 2 years. The program is also available for both the admission cycles, which is July and January. The exams are conducted twice a year, in June and December. So what are you waiting for? Join this program and get an enriching knowledge in the field of apparel merchandising. And to do so, you can log on to the official website of the university, www.ignou.ac.in. Hello learners, welcome to the teleconferencing session. I am Dr. Ali Asgar, Assistant Professor in Distance Education at Staff Training and Research Institute of Distance Education, Indira Gandhi National Open University, New Delhi. Today we are going to have a very interesting session on a very popular program of Indira Gandhi National Open University, that is MA in Distance Education. Since the July admission to July session has completed and we have received a huge number of students in this program, so now we are going to introduce the program which is MA in Distance Education, and today
to discuss more about the program and more about the other aspects of this 2 years master's level program. We have with us Professor Anita Priyadarshini. Professor Priyadarshini is a program coordinator of MA in Distance Education. Professor Priyadarshini has a very wide and rich experience in the ODL system. She has more than 30 years of experience of working in the open and distance learning system, and more specifically in an open schooling system. And apart from academic contributions in the field of open and distance learning, she has been handling with various administrative issues in higher educational institutions, and she has been part of various higher decision-making bodies like NIOS and Indira Gandhi Institute of University. So with these words, I welcome Professor Priyadarshini to this teleconferencing session. And Professor Priyadarshini, first of all, I would like you to please update our learners about the program which is MA in Distance Education. The first question comes in everyone's mind that it is general perception among people that distance education is a mode. But IGNOU, and more importantly, Staff Training and Research Institute of Distance Education, is offering a program which is MA in Distance Education. So how you consider distance education as a discipline? Namaste to all the listeners. Before I talk about the fact that distance education is a discipline, I just like to mention a few things which are related to distance education. You see, once the pandemic started, suddenly the word distance was on everybody's lips, because till now there were different systems of education. You had the formal education conventional system, which is a face-to-face system. You had online education, and then you had open universities which were running and offering programs through distance education. But during the pandemic and during the lockdown that happened, overnight there was a change. Suddenly people were locked in their homes, yet teaching learning had to continue. And that is why all institutions and all modes suddenly became distance mode. And that is why today, when we are talking about distance education, we are talking about it almost like it has become a mainstream education. And that is why whether you are a teacher in a school, teaching in a classroom, or whether you are teaching in the college face-to-face, or maybe you are even just a trainer who was doing trainings face-to-face, now suddenly everything has become possible to be done, of course, face-to-face, but also through the distance mode, which is why distance education has become mainstream, and which is why today when we talk of programs like my colleague Dr. Ali is talking about, the Masters in Distance Education, it has become so relevant, and the fact that across all modes, across all types of educational systems, we are talking about distance education. And coming to the fact that is it a discipline? Because yes, there are people who ask us that I want to do English, but is it distance? I want to do physics. How can I do it through distance? I want to do some vocational program. How is it through distance? So this issue of whether these programs can be done through distance is settled once and for all, because all programs today can be done through distance education. Distance education, however, is a discipline by itself. It is distinct because it is a discipline, and discipline means that it is based upon a body of knowledge. It has theories. There are many theories. If you go on to distance education theories, you'll find that there are many scholars like Michael Moore, like Otto Peters, like Wedmer. There are so many scholars who have written about it and who have propounded theories in distance education. In addition to that, there is a vast body of research which has taken place in distance education. You will see that across the world, whether it is Asia, whether it is Africa, or whether it is any other country in the Caribbean islands or North America, Canada, Australia,
they have large institutions that are offering programs through distance education, and there is abundance of research in the area of distance education. There are specialists, there are experts, there are practitioners of distance education, which is why now, as a discipline itself, it is recognized to be offered. There is a PhD in distance education which is taking place, and the Indira Gandhi National Open University offers a doctoral program in the area of distance education. So quite truly, it is a discipline, and it is a discipline which is well accepted across. It is recognized, and employers, the market recognizes that this as a distance education as a discipline. वेल एक्सप्लेन्ड प्रोफेसर प्रदर्शनी, आपने बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया कि डिस्टेंस एजुकेशन एक विषय के रूप में भी हमारे इग्नू द्वारा प्रोग्राम्स जो हैं एमए डिस्टेंस एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिस्टेंस एजुकेशन और इवन पीएचडी की डिग्रीज जो है डिस्टेंस एजुकेशन एक जो विषय के रूप में पढ़ाई जाती है उसमें इग्नू जो है प्रदान करती है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी संकल्पना और एक दार्शनिक दृष्टिकोण और सबसे बड़ी बात है रिसर्च, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर इतनी ज़्यादा हुई, एक्सटेंसिवली हुई, और इसके फिलोसफिकल फाउंडेशंस हैं। कई सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में इसको एक डिसिप्लिन का एक रूप देने के लिए। सो वेरी वेल एक्सप्लेन। डॉक्टर प्रदर्शनी, एक प्रश्न मेरे मन में भी आता है और हमारे छात्र भी कई बार हमसे पूछते हैं कि सर डिस्टेंस एजुकेशन तो ठीक है, हम सुनते आए हैं, nowadays we are using the open and distance learning. Yes. So I would like you to explain how we are going to explain the open and distance. बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम ओपन से पढ़ रहे हैं. Some of them sort of turn around and say that, you know, we are studying in open. So open, what does open mean? And why is it called open? Why is it open? So basically, to understand open, one has to go down into a little bit of history also. The fact is that were they closed systems earlier? In a sense, yes. Because openness basically means that it is a philosophy. It is an understanding. It is a philosophy by which the learner is studying in a system where there is freedom. Yes. Openness means freedom. Earlier on, or rather in the convention system, what happens is that the learners are studying in such a way that they are following a regimentation, a pattern or a rigidity which is set by the system, and in that system they have to either be in the system. If they are able to comply with the system, well and good. If they are not able to comply, then they have to be pushed out of the system. But in the case of a system which is an open system, we find that the learners have the freedom of what? Of the fact that they can choose their own subjects, the fact that there is an expanded registration period in the system, a fact that they do not need to pass an examination at a set time, but the fact is that as they feel that they are ready about it, they can take the examination at that point of time. In fact, this whole idea of taking exam at your own time is based on very sound philosophical foundations and education theories, which is like mastery learning, which is when you master a particular subject, then you feel confident enough to study it, then you go and take the examination, not that. And another aspect which you will appreciate is that, yes, that when we are talking about openness, we are talking about the fact that it is open to place. I don't need to be sitting in a classroom. In a classroom setting, okay. And I can study from my home or from my home. And more importantly, I can study in my own time. So whether it is time, whether it is place, and as I said earlier on, in terms of mastery learning, you can study at your own pace. And therefore, this whole concept of openness is so valuable to the growth and the real learning which takes place And when we talk about openness, institutions such as open universities, open schools, open distance learning institutions, they are all able to answer, to accommodate and to address these needs of the learner, which is very important.
So that is, I think, why open institutions are so necessary for the real education to take place and for people to learn in their own time and space. Yes, yes. I think what I can take from your explanation, that open is some sort of philosophy Yes. which gives a lot of flexibility to learners. The distance is some sort of method of imparting the education. Am I right, Dr. Yes, Pradeshni? yes, very true. I think you've said it very nicely that distance is only a mode. It is a way of delivery. Yeah. And therefore, distance education, in fact, there can be some institutions which are not open, but they may be doing distance learning. So distance is only a mode. So that kind of a mode, but because distance and open learning complement each other, therefore institutions offer, which are open universities, are usually also distance learning institutions. Yeah, and one other terminology which is used for, in the context of open and distance learning, that it promotes lifelong learning. Yes. Can you elaborate further on that aspect? Yes, yes. I'm so glad that you've talked about this, because today lifelong learning has become so important. Because lifelong learning, when we're talking about, you see, when we talk about the Sustainable Development Goals, when you talk about learning to learn, learning to know, all these things are promoting the fact that today education and learning has to be lifelong. It cannot be sequential. It has to be life-wide. At any stage of one's life, one can learn. And in this 21st century, nobody better than all of us knows that today, especially when we're talking about technology, you find that every day, each one of us is having to acquire some new learning. And that is why if we thought that learning stops at a particular age, no, it doesn't happen. And I'd like to mention, and I think you will also recall one of our own students who was, I think, probably 70 years or plus 70, 75 years. And he came back to do a PhD because if you remember, Yes, you yes, can explain, you can sort of, talk about him also, because these are all students which are important. Because actually that student was a retired employee from a government service, and at the age of, I mean, 74 or 75, he came to us, and actually he appeared for the entrance examination for the MPhil. And that time we interacted with him, and we found him that he is very much interested in pursuing his higher educational goals. So we motivated him, and ultimately he was able to make the entrance examination, and he has successfully completed his PhD, MPhil. And now he has been enrolled in the PhD program. So this is indeed a case of lifelong learning, because there is always an opportunity to follow your dreams and to do what you think is required irrespective of the age, and institutions which are open give you that chance to do it. And in fact, if I recall, that there are many of our students who are young mothers also, who had to leave for one reason or the other, but now they are happy to come back into the system. So therefore, these kind of opportunities are very necessary and required for, which are offered by STRIDE and of course by डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम एज अ होल। दूर शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा एक जरिया है जो आप किसी भी उम्र में, आप 18 से ऊपर, चाहे किसी भी हमारा यूजी प्रोग्राम्स जिसमें जो है 18 साल, इवन हमारे यहाँ तो यूजी प्रोग्राम्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इग्नू में ख़ास तौर से, कि ब्रिज कोर्सेज हैं। ब्रिज कोर्सेज हैं, उसको करने के बाद किसी ने प्लस 2 नहीं किया है, ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो BPP, बैचलर प्रिपरेटरी प्रोग्राम, आप उसको करने के बाद बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं। और सिर्फ एजुकेशनल प्रोग्राम में एंट्री की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, बल्कि एक सीमा जो कोई कन्वेंशनल मोड में एक निर्धारित कर दी जाती है कि इस आयु से ऊपर के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन जैसे प्रोफेसर प्रदर्शनी ने बताया कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्टेंस एजुकेशन में किस तरह से लेटर एंड स्पिरिट में हम लोग फॉलो करते हैं कि एक 70-80 साल का कोई लर्नर भी चाहे, अगर वो इंटरेस्टेड है अपने एजुकेशनल एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए, अपने आप को एम्पावर करने के लिए, तो आ सकता है और एडमिशन ले सकता है। अच्छा प्रोफेसर प्रदर्शनी, डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में एक तो ये फ़लसफ़ा है कि टीचर्स एंड लर्नर्स आर एट अ डिस्टेंट, एक सेपरेशन है जी। लेकिन उस सेपरेशन को कम करने के लिए, उस दूरी को कम करने के लिए
क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उपाय जो है डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में अपनाए जाते हैं? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं और जो की जाती हैं इन द डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, जिससे कि डिस्टेंस को कम किया जाए। चाहे वो जिस प्रकार से आज हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वो एक माध्यम है, रेडियो एक माध्यम है, असाइनमेंट्स को के ऊपर कमेंट्स देना एक माध्यम है, और ऑफ कोर्स फेस टू फेस का भी एक कंपोनेंट इसके अंदर है। ऑनलाइन प्रोग्राम्स का, ऑनलाइन सपोर्ट का माध्यम है। और आई थिंक ज़रूरी ये है कि जो इस प्रणाली के साथ चलना चाहते हैं, उनको इस प्रकार से, जैसे हम बात कर रहे थे मास्टर्स इन डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, सो दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स हेल्प यू टू बेटर अंडरस्टैंड द पेडागोजी ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, and therefore if any of you, or if people are interested in being a part of this system, or even if those who are outside the system, whether you are in conventional education or online education, today there is a need to understand this type of distance learning, and therefore we would want people to enroll in this Masters in Distance Education program and understand and learn this, the way in which this program should be done. And just as you were asking me the philosophy, I think there are programs courses which talk about the philosophy and the history of distance education, and maybe we can talk about the program also then. And you rightly said that it is a technology which is being used to reduce those kind of gaps which are between teachers and learners in a distance education system. And moreover, one aspect you mentioned, assignment. Assignment is a major medium of two-way communication. Can you explain a bit on that? Assignments in a system, in this distance learning system, assignments, or rather you can say continuous assessment rather than assignment. So there are two ways. One is a continuous assessment which takes place, and the methodology for that, which has been adopted by many institutions including IGNOU, is that of assignments. So therefore, when we talk of assignments, when we talk of evaluation, you have, of course, a term end examination, which is done every 6 months. But in addition to that, you also have the facility where you are in the middle of the year, mid-course, you are talking about assignments, so that learners can understand assignments, do it, and very importantly, there is feedback which is given on the assignments. So those assignments form around 25 to 30% of the course. Rest of it, of course, is done by either your project work or by the term end examinations. Okay, nicely explained. And it is assignment which is actually creates the link between learners and teachers. Because in assignments, I think we as a teacher, we are supposed to provide the feedback to learners, which helps them to prepare for the term end examination and so on. So now coming to the program, I would like to know about what are the various features of the program which is being offered. That is a main distance education. You see, there are two programs actually which are offered. One is the diploma level program, which is the postgraduate diploma in distance education, and the other one is the masters in distance education. The beauty of these programs is that both programs are actually embedded into each other. And as you very well know, that in the National Education Policy 2020, there is talk about multi-entry and multi-exit. So these two programs, they very appropriately take that philosophy of the National Education Policy. So the first year of the program is the Postgraduate Diploma in Distance Education, which is called PGDDE. And that program, because it is the first year, if a student wants to take admission in the program and leave for some reason or the other, then the students will get a postgraduate diploma, will be awarded to the student. However, if the student wants to continue in the program and stays in the system, then the student will get what is called the Masters in Distance Education, MADE. It is also possible that a student may leave in the PGDD, but after 4 years, 5 years, or some time, for whatever reason they may have left,
wants to come back into the program and get a master's degree program. So that is also permissible because we are having what we call lateral entry back into the program. So you see how the openness works, where the learner is open to staying in the system or exiting and yet having the facility to come back, which is exactly as has been spoken about in the National Education Policy 2020. Very rightly said, Professor Priyadarshini, because National Education Policy, as I understand, talks about giving a lot of flexibility to learners. Yes. And multiple entry and exit and multidisciplinary approach. In that sense, I think this program, MA Distance Education, is going to fulfill the present requirements of learners. Yes. Yes. Isn't it? Yes, absolutely. It is taking forward the National Education Policy 2020. And soon, I'd just like to also add that the program is not just for national Indian students, but it is also for students who are overseas. Overseas, okay. So recently, the program is being offered in parts of in Africa under the E-Bharti MOU with African countries, as well as with Guyana, where the Guyana Online Academy is also offering the program. And therefore, it is both a national, available to nationally as well as internationally for learners who want to do it. And in fact, this program has been very popular abroad because distance education and online learning as well as open learning is actually a national, international phenomena. You have universities all over and they're following distance learning. So we have a significant number of international students also. And you also mentioned about the flexibility in this program. Yes. Suppose a student who wants to exit with PGDDE, after completing 1 year, he or she will be exiting with the PGDDE, and if he or she wants to continue, they will come out with a MA degree. Yes. So it is entry and exit point is very much flexible for learners. Yes, it is flexible, and which is why the program is you see, we believe the distance learning and the openness actually believes that the learner is at the center. So it is dependent upon whether the learner for any reason has to exit. The flexibility exists wherever the learner can come back also into the system. There may be any number of reasons which is why learners in our programs also, they are from the age group of 25 till almost 70. There's a wide range in the learners. Okay, now we shall stop here for a very short break, and we shall continue our discussion on this special program on MA in Distance Education. Please stay with us. Thank you. Are you interested in television journalism or radio journalism or online journalism? Or do you want to learn with the flexibility of open learning? Or if you are a working professional, wants to enhance your knowledge and skill with certification in the field of electronic media, then School of Journalism and New Media Study IGNOU offers PG Diploma in Electronic Media for you. This program includes audio and audio-visual program production for radio, television and online platforms. Here are some important details about the program. We have total 8 courses of 32 credits, 6 theory courses, 1 practical and 1 project. Eligibility: bachelor's degree in any subject. Minimum duration 1 year, maximum 3 years. Medium is English, but students can write their examinations, assignments
practical and project in Hindi also. So if you are interested in television, radio or online media, please come and join IGNOU's PG Diploma in Electronic Media. Welcome back. Welcome back, learners. We are discussing on introduction of MA in distance education, and in first half of today's teleconferencing session, we have presented before you overall perspective and overall features of distance education, open and distance education. Now we shall be coming to the specific topic, which is introduction to MA in distance education. And to discuss this topic with us, we have with us Professor Anita Pradashni, who is Professor in Distance Education at Staff Training and Research Institute of Distance Education. Madam, again, welcome to this teleconferencing session. Now we shall continue our discussion. In first half, we have very well explained how MA distance education is having a facility of multiple entry and exit, how it is a multidisciplinary, how diverse kind of learners it is attracting, and how this program is being offered in overseas, in different countries like Guyana and other African countries. Now, our learners may be interested to know what is the overall learning outcomes, because now presently what is happening, government documents and Ministry of Education focuses on outcome based learning. Outcome based learning. So therefore, in each and every program, as a teacher, we try to inbuild some sort of feature which is related to learning outcomes. So what are the various learning outcomes of this program? Basically, I would say that the aim of the program is to give a complete overall understanding of distance education. So in that sense, we have a number of learning outcomes which are there, and those learning outcomes, which are the program learning outcomes, are reflected in each of the courses of this program of Masters in Distance Education. So the first learning outcome, because it is, as I said, that it is a discipline and Masters of Education is a discipline in itself. So the first learning outcomes is that we are trying to explain to the learners the philosophy and the processes and the practices of open and distance learning. Okay. So that they are able to, when they become masters of distance education and experts of distance education, the basic tenets of distance education they are well versed with them, and they are able to do it. Another important outcome is that of understanding how the material is designed, because as we said earlier on, that it is the distance is that there is a physical distance between the learner and the teacher. They are not in the same space, spatial space is different. So therefore, the pedagogy of understanding is very important, and anybody who takes enrollment in this program will be learning how to design materials for those persons, those learners who are at a distance. They are not in a classroom situation. Theories and models both. Yes, theories and models will be taught about it. The third learning outcome relates to
the very important aspect of providing learner support services. Okay. Because when the learner is at a distance, there may be some reason why they need support. It could be, and it will be provided in the form of either academic counseling, or in the form of assignments, or in the form of providing counseling to them. So, this is also going to be taught, and they will understand the processes, they will learn about that. Then, because distance education, one of the aims of distance education is to create accessible systems and accessible, affordable systems with equity. Therefore, understanding how these institutions are managed, how they are governed, that is also very important. And also to understand the difference, to explain and describe the difference between dual mode, single mode, bimodal. These are different types of systems, so that is also going to be explained. And then, very importantly, because technology plays such an important role, and then distance education uses technology greatly to make sure that the learners are able to reduce that distance. So, one of the courses of this program, which is on educational technology communications, talks about how you reduce that. This is part of the first year of in fact, these outcomes belong to this to the first year, and so someone who does the postgraduate diploma in distance education will leave after acquiring competencies in these basic areas. Okay. That is based on 5. That is these on the learning first 5 outcomes courses are covering of all the these, 5 courses yes, of the first year. That is PGDD. That is PGDD. Okay. Then if the person continues on in the master's degree program, then they will learn in depth about how curriculum is designed. Basically, how do you make a curriculum for a particular program? Because as you know that there will be many hundreds of programs which will be designed by institutions. So whether it is a course in statistics, or it is a course in physics, or it is a course in history or political science, how do you design the curriculum is also going to be taught in this program. In addition to that, because understanding and being able to conduct research is very important. So we have a whole course which is on research and distance education, and the purpose or the learning outcome of that is to be able to understand research, to be able to conduct research, and therefore become a specialist practitioner who is also a researcher in this program. And another learning outcome relates to economics of distance education, because economics of distance education, that's important to understand, because the economies of scale work in the case of distance education. So very closely related to management and governance, but to see how can you make the system more efficient, how can it be more cost effective, and how can lakhs of students or millions of students study there, and trying to understand that. And in this course there are also case studies related to the universities which are overseas, so that we are able to understand how other universities work. And lastly, one important competency which is going to be taught is that of being able to do research but through a project work. So that project work, of course, has to relate to distance education, but these are the competencies that will be demonstrated at the end of the course, and they form the learning outcomes of this program. Yeah, well defined. Ma'am, one aspect जिस पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, एक रिसर्च का कंपोनेंट भी इस प्रोग्राम का पार्ट है. जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी है 2020 की, वो रिसर्च का जो एक कैपेसिटी है बच्चों के अंदर, वो चाहती है कि हमारे इनफैक्ट अभी जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का जो प्रपोजल है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इसको फॉलो करने के लिए अभी प्रयास कर रहे हैं, और इस पर गाइडलाइंस भी आई हैं. तो उसका जो एक चौथे साल का जो एक कंपोनेंट है, रिसर्च का कंपोनेंट है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ही बच्चों के अंदर जो है, स्टूडेंट्स के अंदर में रिसर्च की जो है कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जानी चाहिए. इन दैट सेंस हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है, जो अनुसंधान है, हाँ, उसके तरफ बच्चों में रुझान पैदा करने के लिए या उसको फर्दर रिसर्च के लिए तैयार करने में काफ़ी योगदान साबित हो सकता है. और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन के फील्ड में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो. क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोविड की वजह से
डिस्टेंस एजुकेशन इतना पॉपुलर हो गया है. अगर आप देखेंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड lots and lots of now studies, even from blended mode based studies हैं. There are lots of studies on online, and there are lots of studies now, many more which are being done to see how distance education, whether it is practices, whether it is processes, whether it is costing. So all these things have now become very 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 popular amongst the और साथ साथ एक जो एक और आपने बताया कोर्स के बारे में, प्रोजेक्ट वाला कोर्स, वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और पोर्टफोलियो बेस्ड लर्निंग की भी आजकल काफ़ी बातें हो रही हैं, ताकि बच्चों के अंदर स्किल्स और कॉम्पिटेंसी जो है उस लेवल का डेवलप हो. तो उस सेंस में भी ये मेरे ख्याल से काफ़ी सहायक है कोर्स बच्चों के अंदर उस तरह के स्किल पैदा करने के लिए. Definitely, and I think that it is important that everybody who is, whether irrespective of whether they are in this system or want to be in the system, but everybody who has whether it is formal education, they should enroll in the program, because this provides them understanding of trying to blend your existing face-to-face system with what you are going to be teaching in terms of distance. जी, आपने डिस्टेंस एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी पे बात की, कितनी लचीलापन रवैया हम इख्तियार करते हैं बच्चों का एडमिशन देने में, उनके जो पढ़ाई लिखाई है उनको पूरा करवाने में. तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस प्रोग्राम MADE, आप करीब बताएंगे कि ये हमें सिर्फ फेस टू फेस में ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन मोड में भी है, और अदर किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज़ जो हैं इस प्रोग्राम के अंदर दी गई हैं? देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत है, और वो इसी प्रोग्राम में नहीं मगर लगभग इग्नू के सभी प्रोग्राम्स में वो फ्लेक्सिबिलिटी है. और उसी तरह से टेकिंग दैट फॉरवर्ड ओनली, ऑफ कोर्स हियर देयर इज नो एज लिमिट इन द प्रोग्राम, इन टेकिंग एडमिशन इन द प्रोग्राम. एंड द रजिस्ट्रेशन which takes place even for this program in the Masters in Distance Education program. It is the July session and the January session. So January 23, we would want those persons who would like to register for this program to get themselves admitted in the January 23 session, and so that they are able to be in this program. साल में दो बार हम दाखिला देते हैं, और साल में 2 बार इम्तिहान भी होते हैं. जी. So exam is also twice in a year. Again in June and in December the exams are there. And more importantly, there is accumulation of credits, which means that आपको सारे एग्जाम एक साथ देने की जरूरत नहीं है. You don't need to take all the examinations or all the courses at the same time. You can take them as you want, or as per your readiness of preparation of the examination. You can take the first exam first, or you can take the last exam first. It doesn't matter. It matters that you can take it as per your own convenience. Your marks or your credits which you acquire will be accumulated, and you can keep adding them on. I think these are very important aspects of flexibility. And also they give a real learning takes place, because there is no content overload on the learner, और the learning load is not there. So एक जिसे कहते हैं सुकून से आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं. And of course, important thing is that the program is offered both in ODL mode, and it is also offered in the online mode. Okay. So दोनों तरफ से आप इसका, जिस तरह से आपको लगता है कि बेहतर आप इसको इसमें भाग ले सकते हैं, आप दोनों में से डिस्टेंस मोड, either distance mode or through the online mode you can take admission. इसीलिए अभी जुलाई के सेशन का जो एडवर्टीजमेंट हमने देखा था, तो हमने पाया कि वहाँ पे MADE ODL मोड में भी अवेलेबल है एडमिशन के लिए, और ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल. बट इन दोनों के प्रोग्राम कोड्स फ़र्क है जी. फ़र्क केवल इतना ही फ़र्क है कि एक में PGDDE है और दूसरे में PGDDOL है, यानी कि ऑनलाइन वाला जो है वो ऑनलाइन से है. ओके. और सिमिलरली MADE OL इफ इट इज़ इन द ऑनलाइन मोड. और अगर हम ओवरऑल प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करें, कार्यक्रम का एक ढांचा क्या है, तो वो कैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कैसे आप उसको बता सकते हैं जरा? फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, जैसे मैंने बताया व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द लर्निंग आउटकम्स, देयर आर 10 कोर्सेज. मास्टर्स लेवल का प्रोग्राम है, therefore there are 10 courses that you have to do. These 10 courses are divided into 2 parts, first year and second year. In the first year,
you have five courses. And when you take admission, those 5 courses will be given to you. When you finish the first year, you will then re-register yourself for the second year, and you will get the next 5 courses. The first 5 courses, in that you have a course MD 411, which is on philosophy of distance education. The second course is on instructional design. The third course is on learner support systems in distance education. The fourth course is on management of distance education. And the fifth course is on educational communication technologies. Okay. So these 5 courses form the first year's courses. As far as the second year is concerned, और ये कितने क्रेडिट के कोर्सेज होंगे फर्स्ट ईयर? सारे कोर्सेज 6 क्रेडिट्स के हैं. केवल एजुकेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज वो 8 क्रेडिट का है. तो 32 क्रेडिट्स के पहले साल के जो कोर्सेज पहले साल में 32 क्रेडिट के कोर्स करने हैं छात्रों को. यस. ठीक है. दूसरे साल में you have again another 5 courses which are there, and those 5 courses are related to research for distance education, which is also 6 credit, curriculum development for distance education, which is also 6 credits, distance education economic perspective, staff training and development in distance education, with both again 6 credits, and then very importantly you have the project work, which is 8 credits. So in the second year also you have 32 credits. So as of now, the total number of credits for first year and second year total, when you get the degree, it is a 64 credit program. Okay. Including that project. Including the project. Yeah. Project is also worth of 8 credit. 8 credits. 8 credits. So it means 8 credit के 2 courses हैं. First year में एक course और second year में एक course. और बाकी जो courses हैं, बाकी जो 8 courses हैं, वो 6 credit के हैं. यानी कुल मिलाकर के आपको 64 क्रेडिट हासिल करने हैं इन 2 वर्षीय मास्टर्स स्तर के प्रोग्राम में. Okay. Now coming to the next questions which may be in the minds of our learners. What is the eligibility criteria? योग्यता क्या है इसमें एडमिशन लेने के लिए? देखिए, the course is open to anybody who is a graduate in any discipline. Okay. Because हमारा मानना ये है that distance education is required by all persons irrespective of their own basic discipline. So even if you are a graduate in history but you would want to know distance education, so therefore you are eligible. If you are a graduate in physics or science or whatever, because ultimately this is only a way in which you are teaching through the distance. So therefore the eligibility is related to a graduate from any recognized university. A person can take admission in the program of masters or even the PGDDE. और एक है कि ड्यूरेशन की बात होती है. वैसे तो आमतौर से इग्नू के सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें काफ़ी लचीलापन रवैया अपनाया जाता है ड्यूरेशन के सेंस में. इस प्रोग्राम स्पेसिफिक क्या ड्यूरेशन है फर्स्ट ईयर PGDDE के लिए या MADE के लिए? Yes. So again, based upon the philosophy of openness, the program has an expanded registration period, which means that अगर आपने PGDDE में admission लिया, then the program is of 1 year. 1 year, okay. But you can complete it any time within 3 years. Okay. Minimum 3 years, minimum 1 year, and maximum 3 years. Maximum 3 years. Okay. So you have time. With 3 years basically means you get chances. After the first year, you will get again another chance in January. Then you take another exam in December. Then another chance in the next year. Okay. And as far as masters in distance education is concerned, then you have because we follow the UGC guidelines, and therefore in that the minimum duration is 2 years. And the maximum duration is 4 years. 4 years for masters. For masters. Okay. So that means that you can pace out your examinations. Okay. आप अपने एग्ज़ाम को अपने तरीके से दे सकते हैं. इस दौरान आप 2 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं. अगर आपने सारे पेपर्स ले लिए, सारे कोर्सेज एकदम फर्स्ट ईयर के 5 कोर्सेज आपने फर्स्ट ईयर में ले लिए और सेकंड ईयर के कोर्सेज 5, तो आप 2 साल में ख़त्म करके हो जाएंगे. नहीं तो आपको अधिक से अधिक 4 साल आपको 4 साल मिलेंगे. There is also provision for re-admission. Re-admission is also there, but we would like यानी 4 साल में अगर आपने पूरा नहीं कर पाया,
तो आपको 5वें साल रीएडमिशन लेकर के बाकी कोर्सेज पूरे करने हाँ, पड़ेंगे। किन्हीं कारणों से of course we would very much want our learners to finish it within the expanded period of 4 years, but for supposing there is some very reason where they're not, then they can continue and they can take it at a later stage also. अच्छा, तो हमने बच्चों को एडमिशन भी दे दिया, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस कर ली, हमने ड्यूरेशन भी बात कर ली कि आप कितने कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने सालों में आप इस प्रोग्राम को पूरा कर सकते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि पढ़ने पढ़ाने के लिए हम किन किन रिसोर्सेज का क्या क्या चीज़ें हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। The program is a distance education program. जी। So the basic requirements the program of course fulfills all those basic requirements which are done, which means that there is self-learning material which is provided to the learners. There are course material which is provided to the learners. This course materials in the form of self-learning print materials. material or digital learning material. Yes. Okay. Because as I said that one of the aims of this program is to teach people how to write material. Yes. And therefore it is very important that we ourselves provide you material for this program which is written in a self-learning material. Okay. Self-learning material basically means that the design of the program of the materials is different from that of a textbook, and there are the way in which it is written, it allows the person to self-learn, and while they are doing that self-learning, they are also learning how to actually design the material themselves. So that is the primary, in very many distance learning institutions, we call it the master medium, which is print. Yes, print medium. But because there is such a huge component of technology in distance learning programs, therefore the program is supported by videos. There are videos which are related to different courses which are there. There are also videos which are related to a particular topic, which is a tough topic. On that also there are videos. And then there is a interactive radio counseling, IRC. I'd like to tell our listeners that IGNOU has Gyanvani, which is running continuously for our programs. And the Masters of Distance Education program is also supported by Gyanvani. Once a month we have a IRC program which is conducted by the Electronic Media Production Center, EMPC, and the faculty of Stride also comes and takes part in this IRC. Okay. And IRC basically means that it's a phone-in also program. Okay. So you can phone the expert who is sitting there and they can answer their questions. हाथ के हाथ वो questions answer हो सकते हैं. Okay. In addition to that, it means that is again a two-way communication. जी. It's not a one-way. Teachers. No, two-way. Okay. And in addition to that, a teleconferencing like this present teleconferencing which is going on, teleconferencing can also take place. And in addition to that, there is live online counseling, because जब हम online programs की बात कर रहे हैं, then we have a live Google Meet counseling also, and so on, which is taking place. So there is interaction even though our learners are at a And distance. what is the medium of instruction? As of now, the medium of instruction for the materials is English, but we are in the process of translating the materials into different languages. Hindi is going to come forward, and the counseling is in bilingual, Hindi and English. We are doing the counseling. We have also got other ways by which we reach out to the students, like WhatsApp groups and so on. We handle that also. Achha, Professor Pradeshni, you also mentioned about assignment is one of the component of this program. Can you update our learners about the weightage of assignments and terminal examination and so on? For learners, we have assignments which are the part of the formative evaluation of the way in which you study, and we also have term and examinations. Okay. Yes. In terms of the assignments, every course has an assignment,
and each course has a weightage of 25% in the assignment. And so you're supposed to, and the beauty of the program is that the assignments are not that all of them come together. Okay. They are paced out so that you are able to do one assignment the moment you do, after 2 months another assignment, so you can pace out your assignments also. And of course the term and examination, which is there in July and in December sessions, which are available. Okay. The examinations are held in the month of June and December. And assignments has a weightage of 25%, and term examination is having weightage of 75%. Yes. Okay. Now, many of the learners may be interested in knowing how much fees they are supposed to pay for the PGDD and MAD. Yes. Please put some light on that. Yes. So the fees is very reasonable. The fees is for Indian students, it is 6,000 rupees, Indian rupees per year, which means that if you take and you pay this fees like if you take admission, you will pay first year fee. You will not pay it together. Okay. Yes, so you pay first year fees, which is 6,000. Next year you pay another 6,000. So the total fees for MADE is 12,000. For PGDD it is 6,000. 6,000 rupees. But if you have students who are from SAARC countries, then it is INR 9,000 per year, which is given. Okay. And again, if they take admission in MADE OL, then it is going to be 18,000. Okay. And if it is countries other than SAARC, then it is US dollars 800 per year. And I must tell you that we do have students inquiries and from students from countries which are other than SAARC, because they feel that this type of program is very important for them whether it's in their workplace or whether in their own areas of education and so on. You mean fee structure is same for the MAD online and MAD ODL mode? Yes, both the fee structures are the same. The program is the same. The only thing is that the mode of delivery is different. One is through study centers, and therefore it is a distance learning program. Okay. The other one is completely online. Okay, now we are going closer to the program. Last query will be from you. What kind of employment the learners will get after completing this program? I would say that the scope of the program is very large, and it has only increased now after COVID and after pandemic. You see that everybody irrespective of the sector that you're working in, needs to have some understanding of distance education. And therefore, the opportunities of course, for open and distance learning are very large. In addition to that, even if you're in the formal education system, you must have an understanding of such kind of things so that you can deliver your programs better. Because at the end of the day, you have to know the processes and practices of online learning and blended learning, which are both taught in this program. And therefore, whether you want to go into government institutions, whether you want to go into higher education or open schooling, or even if you want to just be an independent content creator, then also you should have an understanding of this type of a program, which is the Masters in Distance Education or the Postgraduate Diploma in Distance Education. Okay, very quite interesting, and I mean very useful program, I think. This in program today's is. day and age, it is extremely necessary to be equipped with this kind of knowledge and understanding of distance education, because in one way or the other, each one of us is a distance teacher, Yes, as of well course. as a distance learner also. Okay. Okay, with this, we shall stop here. Thank you so much for being part of this teleconferencing session. So I would request our learners who have got admission in this program to please go through our learning materials which we have provided you and which are available on the EGNOU course. And Also, I think the website, they can take admission through the website. yes, and if you are interested in taking the admission, our January admission cycle will start soon. Please keep visiting our university website, that is www.ignou.ac.in. So from us, goodbye. Thank you so much for joining us.